welcome back to my channel. My name is Honey and today's video is going to be on winter fashion hacks. So आज की वीडियो होने वाली है on winter fashion hacks. First of all, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है so please do subscribe to it ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें about fashion, styling and food videos. So आज हम करने वाले हैं एक ही वुलन स्कार्फ को डिफरेंट वेज में स्टाइल एंड दीज आर रियली प्रैक्टिकल वेज. ये कोई ऐसे ही नहीं है कि बस हैक के लिए कर लिया और रियल लाइफ में हम जिसको पहन के नहीं जा सकते. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एज वेल. सो या आई मीन एज अ गर्ल आई नो कि मुझे भी यही पसंद है कि विंटर्स में ज़्यादा लेयर्स ऑफ क्लोथ्स ना पहनूँ, अवॉइड करूँ बिकॉज अच्छा भी नहीं लगता राइट. एंड ज़्यादातर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि सम गर्ल्स वेयर देयर स्कार्फ और शॉल और एनीथिंग लाइक दैट in the same way in winter. So this video is quite interesting for them as well because एक ही वे में स्टाइल करना हर चीज़ को हर बार is something boring, right? So let's do something interesting, right? So एक ही स्कार्फ को हम अलग अलग वेज में कैसे स्टाइल कर सकते हैं इन विंटर्स येट यू फील कोजी इन दैट ऑल्सो. आपको कोई किसी टाइप की सर्दी नहीं लगने वाली है, that is for sure, and all the hacks are practical as I said before. And yeah, without any further ado, let's get into the video. ये क्या था? Okay, let's get into the video. So here we are with our first hack. So ये स्कार्फ को मैंने स्टाइल किया है in this complete video. इसी से हम सारे फैशन हैक्स करने वाले हैं आज. तो लेट्स सी क्या होता है. तो पहले मैंने इसको फोल्ड कर लिया इन 2 हाफ्स देन 3 हाफ्स जस्ट बिकॉज इसकी थोड़ी जो ब्रेथ थी वो ज़्यादा थी. लेंथ तो ओके है बट इसकी थोड़ी ब्रेथ ज़्यादा थी. सो आई हैव फोल्डेड इन 3 हाफ्स. अगर आपका स्कार्फ इतना ही है तो आप उसको वैसे यूज़ कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो. सो पहले मैंने इसको यूँ ले लिया. So this hack is my personal favorite. This will give you chic and stylish look at the same time. So perfect for casual day out. And there we go. How cute is it now? Let's get into the next hack. So in this second hack, I have folded the scarf in this tilted way like this and then folded up from the top to create a neck and tied up at the back. And here we go. And the rest I will tie like this. And also I have tucked in the knot in the upper part like that. And you can see the back as well. It is not looking pathetic at all, and you can add up the coat with it and you are good to go. I mean, this look is also very cool and cute. So in this third hack, we need to just fold up the shawl like this in the tilted way and just tie it up at the back and tie the knot in the front like that as shown in the video. And rest 2 ends will take it like this and ignore this dramabazi. Yeah, so we just need to tie the rest 2 ends with that knot. So जो पीछे वाला पार्ट है हम उसे आगे कर लेंगे और जो आगे वाला पार्ट है जहाँ पे हमने नॉट टाई करी थी उसको हम पीछे कर देंगे. Don't confuse, just follow the step as shown in the video. And this look might be similar to the typical 90s wala fashion, but I don't think so that it ever gets old fashioned or something like that. I mean, look at it. You can just add up the brooch or anything like accessories to amp it up and you are good to go. And it is cozy as well, I must mention this. And look at this, man.
Let's try this fourth style. So in this style I have taken a rubber band और उसको मैंने center of the stall के बीच में मतलब प्लेस कर दिया है like that, और इससे ना एक बटरफ्लाई काइंड ऑफ लुक हम तैयार करेंगे like that. पीछे भी हमने इसको रैप कर लिया on my body and in front as well, और जो रेस्ट था उसको मैंने रबर बैंड के साथ ही टाई कर दिया and it is looking like that. I mean how chic it looks now. कितना क्यूट लग रहा है and you can carry this look anywhere. सो लेट्स ट्राई द फिफ्थ हैक. इस हैक में ना हम अपनी शॉल को एक टॉप की तरह वेयर करने वाले हैं, और ये ना मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है. पहले हम इसको टाई कर लेंगे लाइक दैट. मतलब ये तो टिपिकल वे है, ये तो हम सबको आता ही है. एक नॉट ही टाई करी है मैंने एंड देन फोल्डेड लाइक दैट एंड हियर वी गो. जो रेस्ट ऑफ द पार्ट था, जो दूसरा एंड था, उसको भी हम ऐसे ही टाई कर लेंगे ताकि उससे एक नेक पे एक बहुत प्यारा सा लुक आ जाए लाइक दैट. आई मीन लुक एट दैट, कितना क्यूट लग रहा है ना, हाउ शीक इट इज़. और ये पूरा कवर्ड है इन द फ्रंट. आई मीन किसी भी टाइप की सर्दी नहीं लगने वाली है आपको इसके ऊपर ना. यू जस्ट नीड वन कोट एंड यू आर गुड टू गो. आई मीन लुक एट दैट, 1 2 and 3 जस्ट लाइक दैट. और आप इस लुक को ना कहीं पर भी कैरी कर सकते हो. आइदर इट्स कैजुअल लुक और एयरपोर्ट लुक, और यू आर गोइंग फॉर अ डिनर डेट. दिस इज़ द बेस्ट लुक टू कैरी. So in this hack we just need to fold the shawl in 4 halves. अगर आपकी शॉल छोटी है, so I mentioned it before as well कि आपको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है. You can use it anyways. And ये हम बन गए लिटिल रेड राइडिंग हुड. जोक्स अपार्ट. तो हम इसको पहले सिर पे टाई कर लेंगे ताकि ये कुछ ऐसा लुक दे, just like that cowboy kind of look, right? So I mean look at that, how chic it's looking and how stylish it's looking, guys. I mean you can carry this look anywhere. Either you are going to shopping or for a dinner date. This is something really good to carry. You can also wear coat on this as well. लास्ट बट नॉट द लीस्ट. सो ये ना सबसे ईजी वे होने वाला है टू स्टाइल इट अप. पहले मैंने इसको रबर बैंड लेके वेस्ट पे टाई कर लिया लाइक दैट. फिर मैंने दोनों एंड्स को भी टाई कर लिया एक दूसरे के साथ लाइक दैट एज शोन इन द वीडियो. और फिर मैंने इसको पीछे से वेयर किया, आगे से वेयर किया एंड वी आर गुड टू गो. हाउ क्विक इट वॉज ना. सो थैंक यू, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो. बाय. So that is it for the day, and if you like this video, don't forget to give thumbs up, and if you have any suggestions regarding my content, and if you have any compliments or comments, you can drop it in the comment section below. And please don't forget to subscribe to my channel, and yeah, meet you in the next video. Bye.